image है। क्या चीज़ है? Hello, am I audible? Yes, sir. So we shall start this lecture. In the last class, if you remember, we were discussing the radical of an ideal. Okay, so we were discussing radical of an ideal. So we were discussing a radical of an ideal, and radical of an ideal by definition is actually it is the set of elements x in A such that x raised to power n belongs to I for some n belonging to the set of positive integers. Okay, this is by definition. And we also actually noticed this one that radical of I is actually the inverse image of the nil radical of A by I under the natural map, where where phi from A to A by I is the natural map, is the natural map. So we also notice this one. Okay,
So these were the things that we noticed in the last class, and I also gave you some exercises. आपने की वो? हाँ भाई, की या नहीं की? वो कर लो. Now we will discuss an example as a motivation, and then we will prove a result based on this example. So example is, if I take A as the ring of integers Z, and I take any ideal I in Z, I equal to mz, where m is greater than or equal to, I am taking it as a proper ideal, okay, where m is greater than or equal to 2. So I can write m as a product of distinct powers of primes. So I can कल write, ये किया है हमने. हाँ इसमें थोड़ा सा हमने आधा छोड़ दिया था, वही हम करेंगे. So write m equals p1 alpha 1 p2 alpha 2 so on pr alpha r for distinct where you have, where p1 p2 so on pr are distinct primes, distinct primes, and alpha 1 alpha 2 so on alpha r are positive integers, are positive integers, okay. Then so now if I take m equal to if I take beta equal to the maximum of these, beta equal to maximum of alpha 1 alpha 2 so on alpha r, then this and this this p1 p2 so on pr power, if I take beta, ये I में belong करेगा, okay, it would belong to I, because this is actually going to be, this is going to be p1 alpha 1 p2 alpha, sorry, p1 beta p2 p2 beta so on p3 beta होगा and so on p और beta. तो ये I में बिलोंग करेगा, क्योंकि आपका ये m जो है बेसिकली ये इसका जनरेटर है, तो ये बिलोंग कर रहा है. So therefore this number would also be a member of I. तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा कि इससे जो आइडियल जनरेट होगा वो सबसेट होगा I का, वो रेडिकल ऑफ आई में बिलोंग करेगा, क्योंकि ये एक्चुअली रेडिकल ऑफ आई का मेंबर है, तो इससे जो आइडियल जनरेट होगा वो सबसेट होगा. सो दिस मीन्स आई गेट दैट p1 p2 so on pr, it belongs to radical of I. So what I get that the ideal generated by this p1 p2 so on prz, okay, ideal generated by this is a subset of radical of I. Now conversely, on the other hand,
if I take any member of radical of I, if Z belongs to radical of I, so then Z Z power k belongs to I. Z power k belongs to I for for some positive integer k. So this means what? Z power k belongs to mz, क्योंकि I हमारा mz है, इसका मतलब हो गया आपका m डिवाइड z पावर k, m डिवाइड्स z पावर k, बट m की वैल्यू है आपके पास p1 alpha 1 so on pr alpha, so this means p1 alpha 1 p2 alpha 2 so on pr alpha r divides z power k. So this actually means that p1 p2 so on pr divides z. Okay, so this means what? This means z belongs to ideal generated by this p1 p2 so on pr. So z belongs to p1 p2 so on pr z. Okay, so इसका मतलब क्या हो गया? So radical of, so this means that radical of I equals, so this means radical of I is going to be equal to ideal P1, ideal generated by P1, P2, so on PR. So radical of I is equal to P1, P2, so on PR Z. But this ideal generated by P1, P2, PR is actually intersection of these. So this is actually equal to intersection I running from 1 to R PI Z. ये कैसे होगा? You know this because if because X belongs to P1 so on PRZ, PRZ, if and only if this P1 P2 so on PR divides X, since they are primes, so this is if and only if Pi divides X for all I running from 1 to so on R. Okay, so this is if and only if X belongs to PIZ for all I running from 1 to R. So this means this is if and only if X belongs to intersection I running from 1 to R PIZ. So this means so for any ideal I which is mz which is equal to piz, intersection of ideals piz I running from 1 to R, और हर कोई piz जो है वो इस आइडियल mz को कंटेन करता है, एंड I equal to mz is subset of piz for all I running from 1 to so on R, है ना? क्योंकि आपका m जो है वो क्या है, बिकॉज I आपका ये है, I है आपका p1 अल्फा 1 so on pr alpha or z. So because यहाँ लिखो because I इसके बराबर है और एंड pi डिवाइड करता है pi अल्फा I को फॉर ऑल I रनिंग फ्रॉम 1 अप टू R. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आइडियल आपका mz है वो सबसेट है piz का, आइडियल piz का फॉर ऑल I रनिंग फ्रॉम 1 टू R. Okay, so what I conclude that
Radical of I is the intersection of all prime ideals containing I. So this means what? So thus in the ring A equal to Z, if I equal to mz, then radical of I equals to intersection I running from 1 to R Piz, where m equals p1 alpha 1, p2 alpha 2, so on, pr alpha r. That is to say that radical of I is the intersection of all prime ideals containing I. Is the intersection of all prime ideals, intersection of all prime ideals containing I. So this is not actually a coincidence, this is actually a general case. ये Z के लिए नहीं है, खास करके ये सब rings के लिए. In fact, we have, this is actually a motivation to the next theorem, which says that the radical of an ideal is the intersection of the prime ideals containing it. Okay, this is a theorem that we are just going to prove. So this is a theorem. The radical of an ideal, the radical of an ideal is the intersection of the prime ideals containing it, is the intersection of the prime ideals. आज मेरे हाथ को कुछ प्रॉब्लम है, so I am unable to write neatly. So the radical of an ideal is the intersection of the prime ideals containing it. Containing it. Okay, so this is what we are proving. The radical of an ideal is the intersection of the prime ideals containing it. So let us see the proof of this theorem. So proof. So let I be any ideal in A. Then one of the previous theorems, one of the previous results, we know that then we know that a radical of I is the pre-image of the nil radical of the quotient ring A by I under the natural map. So it is phi inverse of nil radical of A by I, where this n A by I is the nil radical of A by I, nil radical of A by I, and phi is the natural map, and phi is the natural map, natural map. This we know. But again, by a theorem proven earlier, nil radical of a ring is the intersection of all prime ideals of the ring. So there, but by an earlier theorem,
earlier theorem, this nil radical of A by I is the intersection of all prime ideals of A by I. Is the intersection of all prime ideals of A by I. Prime ideals of A by I. But what are the prime ideals of A by I? A by I के prime ideals किस फॉर्म के होंगे? Yes. किस फॉर्म के होंगे भाई? Yes. So this is a small fact. You can just verify it. So this is a small fact. Any prime ideal, any, मैंने आपको बताई थी ना शुरू में एक कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरम, उसी से आएगा ये. Any prime ideal of A by I has the form P by I. Any prime ideal of A by I has the form P by I, where P is a prime ideal of A containing I. Where P is a prime ideal of A containing I. ये आप इजीली देख सकते हैं कि प्राइम आइडियल जो होते हैं वो P बाई आई के वो इस फॉर्म के होते हैं. प्राइम आइडियल जो क्वोशिएंट रिंग है आपका A बाई आई, उस उनकी फॉर्म होती है P बाई आई, वेयर P इज ए प्राइम आइडियल ऑफ A कंटेनिंग I. ये सिंपल है. आपको पता है कि प्राइम आइडियल्स आपके जो हैं वो, आपको पता है कि A बाई आई के आइडियल्स किस फॉर्म के होंगे, ये तो आपको पता है ना. किस फॉर्म के होंगे A बाई आई के आइडियल्स? A by J tilde J by I. हाँ, J J बाय. plus So any ideal of any ideal J tilde of A by I has the form J by I, where J is an ideal of A containing I, where J is an ideal of A containing I. तो अगर आप P टिल्ला कोई प्राइम आइडियल लोगे A by I का, so let P टिल्ला be a prime ideal of A by I. तो पहले तो वो आइडियल होगा ना, इन द फर्स्ट प्लेस वो क्या होगा? आइडियल होगा. सो P टिल्ला क्या होगा? P by I होगा, वेयर P इज एन आइडियल ऑफ A कंटेनिंग I. कंटेनिंग I. तो हम शो करेंगे कि P प्राइम आइडियल है A का. सो टू शो दैट P is a prime ideal of A. P is a prime ideal of A. So उसके लिए आप करें let A be belonging to A
such that the product AB belonging to P, and this is if and only if this AB plus I coset belonging to P by I. Okay, so this is if and only if A plus I product B plus I belonging to P by I. ठीक है, अब P by I प्राइम आइडियल है. So if and only if A plus I belonging to P by I or B plus I belonging to P by I, because this is prime, P by I is prime ideal. Okay, so if and only if A belongs to P और B belongs to P, तो आपका P जो है वो प्राइम आइडियल हो गया कंटेनिंग I. तो A बाई I के प्राइम आइडियल्स जो हैं वो इस फॉर्म के होंगे. अब हमने देख लिया कि एनी प्राइम आइडियल ऑफ A बाई I हैज़ द फॉर्म P बाई I वेयर P इज ए प्राइम आइडियल ऑफ A कंटेनिंग I. ठीक है, तो अब हम वापस जाते हैं थ्योरम की तरफ. सो हमें पता है कि नील रेडिकल ऑफ A बाई I इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल prime ideals of A by I, and prime ideals of A by I, we have just seen that they are of the form P by I, where P is a prime ideal of A containing I. So thus we have, now radical of I, okay, radical of I, so by our earlier claim, so it is the reverse image of the nil radical of nil radical. It is actually nil radical of A by I, but this is equal to, then it is the intersection of all the prime ideals of A by I, but prime ideals of A by I हमने देख लिया अभी वो क्या है. So this is equal to the reverse image of intersection of prime ideals of A by I. So they are of the form P by I, prime ideals P containing I. So prime ideals where intersection runs over prime ideals of prime ideals P containing I, तो ये आपके पास ये आ गया. ओके, सो देयरफॉर दिस इज नाउ इक्वल टू, इंटरसेक्शन को आप अंदर ले सकते हैं. सो इट इज फाई इनवर्स आपका अंदर जा सकता है इंटरसेक्शन से. सो इट इज इंटरसेक्शन P prime ideals containing I, phi inverse of P by I, but phi inverse of P by I is actually P. So it is actually what? This is equal to intersection P containing I, P. Okay. So therefore we have proven the theorem. We have proven the theorem that the radical of an ideal is the intersection of the prime ideals containing it. है ना, ये आपका P क्या है? P actually है prime ideal containing I. Prime ideal containing I. यहाँ भी आप लिख सकते हैं prime ideal containing I. Prime ideal containing I. Okay. So the radical of an ideal is the intersection of the prime ideals containing it. So we have proven this theorem. ठीक है. Now we have a last proposition about radicals. So suppose you have two ideals such that their radicals are co-prime, then you can just see that the ideals are actually co-prime. So this is a proposition
If two ideals are co-prime, then their radicals are also co-prime. This is what this proposition says. Suppose I and J be ideals in A such that radical of I and radical of J are co-prime, then I and J are suppose you have two ideals I and J such that the radicals are co-prime, then the ideals itself are co-prime. So it is just I will use one of the exercises जो मैंने आपको दिए हैं शायद फिर आप ये फिर एलसीएम के बराबर होगा फिर उनका उनके हैं? जनरेटर्स एलसीएम के बराबर LCM क्या LCM एलसीएम ऑफ देयर जनरेटर्स होगा ना फिर रेडिकल ऑफ नहीं हम जनरल रिंग में बात कर रहे हैं ना वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ रिंग ऑफ इंटीजर्स आप इंटीजर्स की बात कर रही हो जी सर LCM तो कहाँ से आ गया यहाँ पे अच्छा आप कह रही हो I plus J is the ideal generated by their LCM जी सर हाँ वहाँ से कह सकती हैं आप you can say that but I am proving it for a general ring not necessarily the ring of integers okay ओके सर ये किसी भी रिंग के लिए ट्रू है so by an earlier exercise earlier exercise radical of I plus J equals radical of I plus radical of J ये हमने अभी आपको एक्सरसाइज दी उससे आता है ये radical of I plus J is radical of I plus radical of J अब आपको गिवन है कि radical of I and radical of J are co-prime so given that radical of I and radical of J are co-prime इसका मतलब क्या हुआ so this means radical of I plus radical of J equals A they are co-prime so therefore it is equal to A so this means so radical of I plus radical of J equals radical of A what is radical of A radical of A क्या होगा रेडिकल ऑफ ए रिंग रेडिकल ऑफ एन आइडियल तो हमने कहा ए भी तो अपना एक आइडियल है ना खुद में रेडिकल तो आपने किसी भी सबसेट के लिए डिफाइन किया ए के किसी भी सबसेट के लिए जी सर तो इसमें ए भी तो अपना सबसेट है ना अपने आप में तो रेडिकल ऑफ ए हाँ रेडिकल ऑफ ए क्या होगा इसमें वो वाले एलिमेंट्स आएंगे ए के ही सच दैट x पावर n बिलोंग्स टू a हाँ तो क्या होंगे वो सेट क्या होगा रेडिकल ऑफ ए x such that x power n belongs to a for हाँ some positive integer n हाँ तो ये क्या होगा क्या होगा है ए इटसेल्फ हाँ रेडिकल ऑफ ए तो ए ही होगा है ना रेडिकल ऑफ ए इज ए
ए के सारे एलिमेंट की यही प्रॉपर्टी होगी, ए के सारे एलिमेंट जो है उनकी कोई भी पावर आप ले लो वो ए में ही होंगी। सो रेडिकल ऑफ ए जी इज सर। ए। सो दिस मीन्स आपके पास ये आ गया रेडिकल ऑफ आई प्लस जे इज ए। तो अभी जो हमने पीछे एक्सरसाइज छोड़ी उसमें एक पार्ट ये भी था, आपके पास ये भी था कि रेडिकल ऑफ आई इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ आई इक्वल टू ए। ये मैंने देखा उस एक्सरसाइज में। तो आपके पास आ गया रेडिकल ऑफ आई प्लस जे इक्वल टू ए। सो इट वुड इम्प्लाई दैट आई प्लस जे इक्वल टू ए। तो इससे आपको क्या मिला? इससे आपको मिला कि आई और जे भी को प्राइम है। सो दिस इम्प्लाइज आई एंड जे आर आल्सो को प्राइम। ठीक है। So suppose you have two ideals such that the radicals are co-prime, then the ideals are also co-prime. Okay. So any questions so far? तो रेडिकल हमने ख़त्म किया है, रेडिकल्स पे हमें इतना ही डिस्कस करना था। आगे जब हम आगे हम इसको और डिस्कस करेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी। यस, एनी क्वेश्चन? तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ आइडियल्स। ठीक है। So next topic is extension and contraction of ideals। ठीक है। तो ये क्या है, इसके लिए थोड़ा सा हम इस बैकग्राउंड इसकी देखेंगे क्या है ये। सपोज आपके पास कोई रिंग होमोमॉर्फिज्म है तो उसकी सो लेट f from a to b be a ring homomorphism। ठीक है। और i कोई भी आइडियल लिया आपने a में, सो लेट i बी एन आइडियल इन ए। तो आपके पास जो f ऑफ i है, f ऑफ i जरूरी नहीं है आपका b में आइडियल हो। इमेज ऑफ एन आइडियल नीड नॉट बी एन आइडियल।